Hi friends, welcome to my YouTube channel. So let's discuss today's price action. So today I took a trade in EU, but I closed that trade at break even. So let's discuss why I took this trade and why then I closed it break even. If we look at the daily chart of EU, we can see that market hit this key level, okay, and formed a swing point. And now on Monday it was continuing its move to the down, okay, and I can see similar thing in DXY trying to continue its move to the upside till these areas, okay. So the similar thing was in GU. It was, as it's anti-correlated pair, it was trying to continue its move to the downside. So when I went to 4-hour time frame, I saw that the market, let's move first 1-hour time frame. So here in 1-hour time frame, we can see that market hit this key level, hit this key level, and just came down, closed inside this swing and forming some sort of swing, and then this candle formed some sort of change in state of delivery. If you look at 30-minute, it will be more clear. So here you can see the market, our bias was bearish, and our idea, we frame our trade with the idea that we market hit this key level, and you can see we got this change in state of delivery. We got this change in state of delivery. Okay. So we had a change in state of delivery here. It was a V formation. Okay, so I was like, okay, the high of the day has formed, and now we continue our move to the downside. And if you go to the daily time frame, you can also see that it's respecting the 50% of this candle. If you look closely, you will see that this candle is respecting the equilibrium of previous candle. And now if we look at the 4-hour time frame, we have a 5 a.m. reversal. As it is a forex pair, so it's a 5 a.m. reversal candle. So when I deep dive into 30-minute time frame, what I found that we have a key area which is this, and we also have some sort of equal lows resting below as an objective.
Okay, see these things over there, and also we had some major objective which was like this, equal lows. These things were there, so that's why I decided to take a sell trade right after this candle 2 formation. You can see this is candle 1, candle 2. It's a continuation trade. Our bias is bearish. We have framed our trade idea, and then we got a continuation swing point. We mark. So here what happened, I moved to 30-minute time frame, and you can see that this 30-minute time frame has already given a change in state of delivery. Okay, this is the first change in state of delivery which we got in candle 2. Okay, so now we got a change in state of delivery in candle 2, but I wanted for this candle to close before taking trade. Okay, so what I saw that it retraced into this key level, and from there it just, you can see it just again gave us a second change in state of delivery here, and it was just before closing of this C2 candle. So it was very clear that next candle will continue its move to the downside, and I wanted to place my entry somewhere at around this area. Okay, but at that time I was not in front of computer, so I was a little late into this trade. So I took entry at around this area, and my SL was at around this area, and which was, I would say, a little big SL, because my first objective was at around this area. It was my equal lows, so it was first objective, and then second objective was somewhere at around this area. So almost 1:2. So this was the trade idea, but I closed this trade at around break even because we had our minor objective. So in 30-minute time frame, you can see what the market reached, this C3 candle reached this objective, and after reaching at this level, you can see it just retraced all the way back up. So this was a clear consolidation price action. Okay, or even it could retrace or reverse, but here I wanted to see a continuation move to the down like this, not a retracement. Here I wanted this sort of candle which could continue its move to the downside. Okay, but I did not get this sort of candle. Okay, it just retraced all the way back up. So that is the reason why I just closed my trade at around break even, because it was near break even point. So I just closed this trade at around break even. So apart from it, I did not get any nice entry in other pairs. And although it continued its move to the downside, but at that time I was like, okay, it just hit this level, so I should not hold this trade, because I did not wanted to see sort of retracement. Okay, it could easily continue its change its direction and continue its move to the upside. So that is the reason why I just closed this trade early. I can see the execution here. Okay. In gold, there were nothing, because market was completely inside. Market was completely inside a range, so
there were no setup in gold. So at this point, you can see that market hit this opposing candle, hit this opposing candle, and after hitting this opposing candle, we can see that market just continued its move to the upside. And if you look at gold euro, this was a bullish candle. Okay, and in the gold, it was a bearish candle. Okay, so it was some sort of precision swing point. Okay, but why why today I did not wanted to take a buy, because you can also see that we have some sort of opposing candle just like this. We do have some opposing candle, and then we have an opposing candle at around this area. So we were at an area where it could easily give us a range bound market condition, and you can also see that it is near the equilibrium of this range. Okay, so there were high chance that the market can go inside the range. And when I came to 4-hour time frame or even 1-hour time frame, I could see that the market is in between this big range. This is the range where the market is trapped. Okay, so I just wanted, so let's suppose if my bias is bullish, I wanted for the market to manipulate this low, okay, then continue its move to the upside. And if my bias is bearish, so I wanted for the market to continue up, manipulate, then. So this was my whole idea, the gold, but but unfortunately I did not get any manipulation from the price, so I did not wanted to take any trade in between these price action. It was, for me, these were not high probability trades, so I did not take any trade here. We can see we have a very big move to the upside. See, look at how the momentum is continuing, and then with the same, it's again came down. So whenever you see this sort of large move up, large move down, usually you get some sort of range bound market condition. So that's the reason why I did not I was not looking for any trade in gold. Okay, because on daily bias, on daily I was not very clear like in which direction we should continue. Okay, daily bias was completely, so day was just went up and just grabbed all these lows and retraced all the way back up. So it was not giving us, it was not giving me a high probability trade.
Sorry. This is the reason why I did not want to take any trade in gold. And you can also see that this is a corrective price action. Market was just slowly moving down. So this is some sort of corrective price action. And if we look at this price action, this is in some sort of pattern forming. Okay, so gold is forming some sort of pattern, so we can easily get continuation like this. So let's move to indices. हाँ परमेश्वर, सब बढ़िया चल रहा है भाई। आप बताओ कैसा चल रहा है? सो इंडाइसेस में हमारा बायस बियरिश था, और बियरिश होने का रीज़न ये था कि हम देख सकते हैं जो US30 है और US500 और नेश 100 तीनों सिंक हो चुके हैं, और सिंकिंग का जो ट्रिगर था वो US30 ने एक्टिवेट किया था अपने इस हाई को मैनिपुलेट करके, क्योंकि it was a relevant high which has already been taken by Nash and US 500, so there were high chance that YM will take the high also, and then all the assets will start continuing its move to the downside, because when Nash hit this area, it just continued its move to the downside. Okay, so we had a bearish bias, but the problem which today we did not get any sort of retracement to be in the trade. Okay, you can see market just opened and then continued its move directly to the downside. So, and one more thing which I did not like was that YM at that time was continuing its move to the upside, which was again like I don't want to see that YM continue up and Nash continuing its move to the downside. And कोई बात नहीं परमेश्वर भाई, कहीं जहां से सही लगे वहां से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको टी ट्रेड्स के फ्रैक्टल मॉडल को देखना चाहिए।
वो काफ़ी लॉजिकल है और मैकेनिकल, सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल थिंग। ये आईसीटी पूरा देखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, बट अगर आप टी ट्रेड के फ्रैक्टल मॉडल को देखते हो तो वो थोड़ा एक मैकेनिकल अप्रोच दे देता है आपको। बट ओवरऑल आपको आईसीटी मतलब आना ही पड़ेगा, लेकिन एक लिमिटेड वे में ये लोग सिखाते हैं। जो इन लोगों का जो कोर्स है टी ट्रेड्स का, वो काफ़ी तरीके से सिखा रखा है उन लोगों ने, चीज़ों को बताया हुआ है। सो आज फ्यूचर्स में मैंने कोई एंट्री इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने देखा कि जो US 30 है वो काफ़ी बुलिश तरीके से ऊपर जा रहा था, और कैश बिल्कुल बियरिश नीचे जा रहा था। और एट द सेम टाइम ये जो हमारा US 500 है, ये 930 का कैंडल है, ये 930 का कैंडल है ईएस का, 930। और ये उसी टाइम का कैंडल है 930 का ई। तो हम देख सकते हैं कि तीनों एसेट बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चल रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में किसी में पर्टिकुलर ट्रेड लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी एसेट किसी दूसरे एसेट को, इसमें आप ये नहीं बता पाओगे कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है इस टाइम पे। ठीक है, इसलिए मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट मार्केट कंडीशन था, ऑल्दो बायस बिल्कुल क्लियर था, बियरिश बायस था। बट मार्केट ने कोई अपॉर्चुनिटी दिया नहीं मेरे को यहाँ एंट्री का। ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं। मैनिपुलेशन हुआ था यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो US 500 में, बट अगेन मुझे कुछ खास बोला नहीं वो एंट्री। 10 AM ने अपने हाई को हिट किया, उसके बाद बहुत बुलिश था ये। यहाँ से आफ्टर दिस कैंडल 10 कोई एंट्री देखी जा सकती थी इस कैंडल, इन कैंडल्स के अराउंड, बट अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट डे। स्टार्ट करते हैं अपने बैक टेस्टिंग को। ये हो गया हमारा आज का जो भी जैसा भी दिन था। सो ये ट्रेड को पकड़ना काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो C2 फॉर्म, यहाँ हमारे पास एक C3 कैंडल फॉर्म हुआ है, C1 C2 C3। इसके बाद हम कैच कर सकते थे इस मूव को, लेकिन वही थोड़ा रिस्की होता, क्योंकि नैश बियरिश था और US 30 बुलिश था, और एट द सेम टाइम ये बिल्कुल रेंज बाउंड था। तो ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट था कि अभी मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, ऑल दो इसने मैनिपुलेट भी नहीं किया था इस हाई को अपने। ठीक है, तो ये मेरे लिए थोड़ा रिस्की ट्रेड था। तो मैंने आज कुछ इंडाइसेस में आज कुछ खास देखा नहीं। स्टार्ट करते हैं हम अपने बैक टेस्टिंग से।
ट्रेड का विन रेट अगर मैं बोलूँ तो आप स्टार्टिंग में ये लगा लो कि भाई 40 से 50% का विन रेट रहेगा। मतलब अगर आप जैसे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, तो अगर 2-3 महीना आप कोर्स को देख लेते हो, बैक टेस्टिंग कर लेते हो तरीके से, तो 30 से 40, मतलब 40 प्लस रहेगा विन रेट। और आफ्टर 6 मंथ्स मेरे हिसाब से 50 से 55% का विन रेट रहेगा। और आरआर की बात करूं तो एवरेज 1:2 आरआर रहेगा आपका आफ्टर आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर। 50-55% के बीच में विन रेट रहेगा। कभी हो सकता है 45 हो जाए, कभी कभी 50 हो जाए, कभी 52 हो जाए, बट एनीवेयर बिटवीन 45 to 55 ये यहाँ पे आप प्ले करोगे आफ्टर 1 ईयर। बट स्टार्टिंग के लिए इन फर्स्ट 6 मंथ्स, अगर जैसे अब बिल्कुल बिगनर तो नहीं हो आप परमेश्वर भाई, तो मेरे हिसाब से आप 40-45% के अराउंड विन रेट आप ले आओगे 2-3 महीने के अंदर। 3 से 4 महीनों में आपका आ जाएगा 45% विन रेट। और आरआर आपका वही 1:2 रहेगा। अगर मैं डेली की बात करूं तो मंडे ने अपना लो ऑफ द डे फॉर्म कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो मुझे यहाँ से कंटिन्यूएशन डे दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव देखूं तो मुझे एक अपसाइड का ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। इसको मैं एनक्यू ओपन कर देता हूँ, इसमें ईएस ओपन कर देता हूँ। हमारे पास एक अपसाइड का ऑब्जेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारे फेलियर स्विंग्स भी दिख रहे हैं। और चूंकि एशियन और लंदन सेशन हो चुका पहले ही, तो अगर डेली प्रोफाइल की बात करें तो मार्केट ओपन हुआ, लो फॉर्म किया, और अब मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो और हमारे पास ऊपर में ऑब्जेक्टिव भी पेंडिंग। अगर हम देखें, इसकी बात करें या, या इसकी बात करें, तो हमारे पास ऊपर में ऑब्जेक्टिव भी पेंडिंग है, ठीक है। फेलियर स्विंग्स है हमारे पास। ऑल्दो मार्केट उतना ऊपर नहीं जाने वाला है, लेकिन हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज मार्केट इसको टैग कर ले, या इसको भी टैग कर सकता है, क्योंकि बुश काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स क्रिएट कर रही है। तो हो सकता है एनक्यू आज इस इन दोनों में से किसी एक को टैग करे। तो हम उसी तरीके से अपने ट्रेड को अलाइन करेंगे। अब हम 1 आवर पे चले जाते हैं, इसके बाद हम 4 आवर की प्रोफाइलिंग करेंगे, पहले 1 आवर का लो कंफर्म करने के बाद।
सो यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना लो फॉर्म कर लिया क्लियर, और ये नीचे आई, और वैसे तो कुछ खास रिलेवेंट स्विंग को हिट नहीं किया है इसने। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो मार्केट अभी रेंज बाउंड ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इसके और इसके बीच में रेंज बाउंड है। ओके, और उनके इन दोनों के बीच में अगर मैं, और यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना, जैसे ये हमारा इंटरनल, ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक फेरियर स्विंग्स इसको मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास एक लो है, तो मार्केट ने इसको भी हिट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे पास कल प्रीवियस डे पे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी तो हुई थी, लेकिन आफ्टर दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमें एक कॉन्टिन्यूएशन चाहिए था इस तरीके से। बट यहाँ क्या किया मार्केट ने, आफ्टर गिविंग अस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट कंसोलिडेट कर गई। तो आफ्टर दिस कंसोलिडेशन हम ये चाहेंगे कि मार्केट अपने लो को मैनिपुलेट करे फिर कंटिन्यू करे। ओके, सो अभी का हमारा बायस ये है कि बायस हमारा बुलिश ही है, लेकिन हम वेट करेंगे मार्केट को इन लोज को मैनिपुलेट करने का, तब हम बाइंग ट्रेड देखेंगे। तो हम आ जाते हैं आराम से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और न्यूज़ भी देख लेते हैं, क्योंकि 9:30 के टाइम पे अगर हम 1 आवर पे रुकेंगे तो कई बार मूव मिस हो जाती है। और आज 12 फैब है, 12 फैब को हमारे पास कोर इन्फ्लेशन रेट का एक न्यूज है, उसके बाद कोर इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर है। फिर हमारे पास एक इन्फ्लेशन रेट भी है। ओके, फिर 10 AM पे भी एक न्यूज है। तो आज काफ़ी सारी न्यूज़ है 12, तो हमें काफ़ी वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकती है। तो हम वेट करेंगे मार्केट को कि मार्केट अपने लो को मैनिपुलेट करे और कंटिन्यू करे ऊपर की तरफ। यस, 8:30। ओके, 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 इसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैनिपुलेशन दे दिया है। खैर, हम आराम से वेट करेंगे, क्योंकि इस टाइप के मूव को ना आप कैच कर सकते हो और ना ही after forming this sort of move, we cannot participate in those sort of candles. So we will just wait. Just move to 30-minute time frame. So it's 8:30. Let me mark our 9:30 AM candle. So this is our 9:30 AM candle. Okay. Now we can see that market has manipulated these lows and now trying to counter its move to the upside. And here we have also strength switch with YM. Okay, you can see YM first, and then it came down, took this low, and now trying to continue its move to the upside. So we do have a strength switch also. So we have formed C candle 3, and we have also taken all these lows. So we can take trade, but this will be our first objective, candle opening price. This will be our first objective because market has already given us a big move to the downside. So let's move to 4-hour time frame, and you can see that it has just manipulated the low, these lows, and now trying to continue its move to the upside. Let's move to 3-minute time frame.
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है ऊपर की तरफ. तो इन these sort of continuation signatures, we usually wait for market to come down, form its wick, then give us a change in state of delivery, then we would like to take a trade. Okay, so we will be just waiting. So you can see it just came down, forming some sort of wick, and then let's just wait and see if it gives us. Okay, now it's perfect. You can see, let's just wait for one more. Perfect. You can see how I draw it and how it formed. It just formed as I draw as a perfect. So we will place an entry at around this area. Okay, we do have some inversion fair value gap, and fair value gap, we can take a limit order also. So let's place an entry. I would place a limit order. Take a 1% risk. SL will be somewhere at around this area, and take profit will be 1:2. I don't know why it's okay. Perfect. I need to risk 1580. 1580. Okay, let's just place trade. We have placed our limit order, and let's see whether the market hit this area or not. We will still wait because our objective has not reached yet. Okay, we have formed some sort of consolidation. So our daily objective is not reached yet. So we will still wait, and our entry is still valid because market is just consolidating. Let's just wait. See, we have we are now into the trade. Let's see whether it's so now the market has reached into our objective. So once the market has reached to our objective, I would like to just either you can book some partials, or you can also make the trade break even, because the market has already reached at its opening price, okay, which was our initial objective. And now we also have our other objective, like this high, these are the failure things. Okay, so the market can reach there also, so we will wait patiently. So now we get our take profit. You can see that market gave some consolidation, and then it just continued its move to the upside. Okay, so it was a pretty nice trade, I would say. Our daily bias was clear. I wanted
daily bias was bullish. We had formed the low of the week and we had clear swings to the upside. So our daily bias was bullish, and we were in this big range. You can see that we were in the high. This is the high of the range and this is the low of the range. Okay, so let me just darken it. This is the low of the range and this was the high of the range. Okay, so market was in between this range, and I just wanted for the market to manipulate the low. So once the market manipulated the low, you can see it just gave us a candle 2, okay, a reversal candle. So once the candle 3 opened, I just placed my entry. And if you look at 3 minute also, then also in 3 minute we had a candle 3 closer, and then it was a candle 4 for entry. But in 1 hour it was just a candle 2 entry, which was a nice entry because market hit this key level. Our daily bias was clear, so we take the trade. In 3 minutes, we waited patiently for intercandle change in state of delivery. We got a intercandle change in state of delivery here. Okay, so once we get this intercandle change in state of delivery, I place a limit order at this inversion fair value gap, and once market came down, hit this area, okay, our stop loss was at this area, and once the market hit this objective, I just make our trade break even, and then it continued its move to the upside. And let's suppose the market have reached at around let me just change the color. Let's suppose market reached to our objective before hitting our limit order, so I would just exit this trade because now it's not a valid trade. डेली बायस देखो, पहले तो सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि डेली बायस हम हर रोज डेली बायस नहीं निकाल सकते हैं। ये चीज आपको अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना होगा, ठीक है। अब फिर बात आती है कि लेकिन ट्रेड तो हमें रोज करना है, ठीक है, तो अब ट्रेड कैसे करें रोज? तो वहां पे फिर प्ले होता है कैंडल प्रोफाइलिंग। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे डेली, मैं अभी एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे वैसे मैं डेली बायस के लिए ना एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ जिसमें ऑलमोस्ट आप हर कंडीशन, डेली बायस के हर कंडीशन को मैकेनिकली प्रिडिक्ट कर दोगे, ठीक है, 99% ऑफ द टाइम। और ऐसा नहीं कि वो प्रिडिक्शन सही रहेगा, वो 50-60% ही सही रहेगा, 70% तक उसकी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। लेकिन काफ़ी ईजी हो जाएगा उससे। अगर उतना भी कर लेते हो आप, 50% 60% टाइम अगर आप डेली बायस अपना सही कर लेते हो मैकेनिकली, तो वो काफ़ी ईजी होगा। तो देखो, सबसे पहले तो डेली बायस को हम डेली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अगर डेली बायस हमें रोज ही प्रिडिक्ट करना है। अब ऐसे मार्केट कंडीशन में आप डेली बायस बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर यहाँ पे प्ले होता है हमारा कैंडल प्रोफाइलिंग। कैंडल प्रोफाइलिंग, 4 आवर प्रोफाइलिंग एंड एसएमटी, ये 3 चीजें यहाँ प्ले आउट होती है। कैंडल प्रोफाइलिंग, 4 आवर प्रोफाइलिंग एंड देन एसएमटी। सॉरी, मैंने अपना वीडियो कैप्चर बंद किया हुआ है, सॉरी। सो ऐसे केस में अगर जैसे आज का डेली बायस और वीकली प्रोफाइल, ये 4 चीजें अगर मैं बोलूं अच्छे से, तो 4 चीजें, अगर मेरा डेली बायस क्लियर नहीं है तो फिर क्या चीजें हैं जो मुझे देखनी चाहिए? वीकली प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल, 4 आवर प्रोफाइल एंड एसएमटी। ये 4 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी अगर आपका डेली प्रोफाइल, डेली बायस क्लियर नहीं है तो सबसे पहले हम देखते हैं, आज जैसे मैंने ये डेली बायस बुलिश है, ये कैसे निकाला मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मंडे वीक का लो फॉर्म कर चुका है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे ना, आप देखो वीकली बुलिश है, क्लियर कट बुलिश दिख रहा है, और बहुत ज्यादा, और यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये इक्वल इक्वल हाइज पेंडिंग है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट इन इक्वल हाइज को तो लेगा ही, उसके बाद ये नीचे जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम और ध्यान से देखें थोड़ा, तो हमारे पास यहाँ पे एक फेलियर स्विंग भी है यहाँ पे भी। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट को अगर नीचे जाना ही है, ठीक है, तो एटलीस्ट इन फेलियर स्विंग्स को ले लेगा, उसके बाद नीचे जाएगा, या फिर इन फेलियर स्विंग्स को रन कर जाएगा। दो टाइप का कभी भी किसी भी की लेवल को अगर प्राइस हिट करती है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो लिक्विडिटी स्वीप होएगा या लिक्विडिटी रन होगा। तो यहाँ पे भी जब ये, अब हमें नहीं पता है कि अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने वाला है या लिक्विडिटी रन होने वाला है। रन का मतलब है कि मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा ऊपर की तरफ, स्वीप का मतलब है कि मार्केट जाएगा, लिक्विडिटी को लेगा और नीचे की तरफ स्वीप कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। हम बस ये समझ सकते हैं और एंटिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप ईएस के प्राइस एक्शन को देखोगे तो हमारे पास काफ़ी सारा फेलियर स्विंग्स पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि भाई इतने सारे फेलियर स्विंग्स हैं, तो बहुत ज़्यादा। और अगर आप इस कैंडल को देखोगे, ये कैंडल को देखो, इस वीकली कैंडल को देखो, ये क्लियर कट बता रही है कि भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। अगर आप, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ अगर देखो, अगर आप इस एसेट में नहीं निकाल पा रहे हो डेली बायस, तो आपको दूसरा एसेट यूज करना पड़ेगा जो कि कोरिलेट हो इसी से। एनएस से कोरिलेट होता है ईएस, तो ईएस में मुझे थोड़ा बहुत डेली बायस क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट नीचे आई, रिट्रेस किया और वापस से यहाँ पे कैंडल टू फॉर्म कर रहा है, देख रहे हो। इसके लो को लिया और कंटिन्यू कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इससे मुझे ये पता लगा कि भाई वीकली पे मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब मैं आ गया डेली पे, ठीक। अब मैं जब डेली पे आया तो डेली पे क्या देखा मैंने कि मंडे ओपन हुआ है एक गैप लो के साथ। इट मींस कि इसने वीक का लो फॉर्म कर दिया है, ठीक है। और ये गैप हुआ, ये ओपन कहाँ हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस में ओपन हुआ है। ये हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है कि जहाँ पे ये डेली कैंडल ओपन हुई है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर वीक को लो फॉर्म करना होगा तो ये बेस्ट एरिया है कि जहां से वीक अपना लो फॉर्म करेगी। अगर एक वीकली कैंडल फॉर्म होनी है तो वो फॉर्म कुछ ऐसे होएगी, ठीक है। छोटा सा विक बनाएगा, एक छोटा सा इसका विक होएगा नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी। एक एक ऊपर ऊपर में भी एक विक बनाएगी अगर ये एक्सपेंशन कैंडल है तो। ये बुलिश बियरिश क्यों नहीं हो रहा है? वो बुलिश 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 बुलिश। तो ये बुलिश कैंडल हमारे पास फॉर्म होगी। तो इस तरीके का एंटीसिपेट कर सकते हैं कि अगर वीकली कैंडल बुलिश फॉर्म होनी है तो मंडे ने अपना लो फॉर्म कर दिया है वीक का यहाँ तक आके, और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिजेक्शन दे रही है। इट मींस बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और जूम इन करके ध्यान से देखोगे तो आपको और चीज़ें दिखेंगी। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने प्रीवियस एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लो को भी टैग किया था मंडे को, ठीक है। और उसके बाद ऊपर गई है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारे को, इतनी सारी चीज़ें पता लग गई देख के, बस ड्राइंग को देख के। इसके बाद अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ट्यूसडे क्या हुआ? ट्यूसडे यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया। अगर हम देखेंगे तो ना ये ऊपर गई ना ये नीचे गई, कंसोलिडेट कर गई। और अगर हम यही चीज़ दूसरे टाइम फ्रेम्स में देखेंगे, चार्ट्स में देखेंगे, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट कंटिन्यू करना चाह रही है, ठीक है। इसने हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, बट ये कंटिन्यू करना चाह रही है, नीचे गई और ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हमारा बायस था कि भाई कंटिन्यू तो करना चाह रही है ये, लेकिन ये कंसोलिडेशन कैंडल है, ठीक है। अगर मैं 4 आवर पे गया तो 4 आवर पे मैंने देखा कि भाई एक रेंज दिख रही है, ये लो ऑफ द डे
और ये ऑलमोस्ट हाई ऑफ द डे। तो अगर मुझे बाइंग पे जाना है आज और मेरा बायस बुलिश है, तो मैं क्या चाहूँगा? मैं ये चाहूँगा कि मार्केट ओपन हो नीचे की तरफ। अभी देखो, अभी मैंने क्या क्या यूज किया, वीकली वीकली प्रोफाइल यूज किया, ठीक है। वीकली प्रोफाइल मतलब वीकली कैंडल कैसे बनेगा, ठीक है। डेली प्रोफाइल मतलब डेली कैंडल कैसे बनना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा बायस बुलिश है, इट मीन्स कि मार्केट ओपन होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, विक बनाए और फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे समवेयर एट अराउंड दिस एरिया, तभी तो एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा बायस बुलिश है और कैंडल ये ना करके कैंडल ये करती है, मार्केट ओपन हुई, ऊपर की तरफ चली गई, अब इसने मेरे बुलिश बायस बायस को इनवैलिडेट कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर जब मेरा बायस इनवैलिडेट हो गया है तो दो चीजें हैं, या तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरा बायस अब ये कंटिन्यू करता चला जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे ये कंटिन्यू करता चला जाएगा, या ये एक बियरिश कैंडल फॉर्म करेगा, ये विक बनाएगा और ये नीचे की तरफ ऐसे गिर जाएगा, हमें नहीं पता ये चीज, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उस दिन को अवॉइड कर दो, आप मत ट्रेड करो उस दिन, ठीक है, आपके पास क्लियर कट बायस है नहीं तो रहने दो, या फिर दूसरे कंडीशन में आप 4 आवर की प्रोफाइलिंग का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि डेली बायस तो आपका इनवैलिडेट हो चुका है, जो आपका बायस था वो इनवैलिडेट हो चुका है थ्रू कैंडल प्रोफाइलिंग। कैंडल प्रोफाइलिंग करने से आपको ये पता लग गया कि भाई मेरा बायस है, मान लो आपका आज का बायस बियरिश होता, मान लो एक बात, आपका बायस होता बियरिश का, बुलिश नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ और बायस है हमारा बियरिश, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुई, नीचे गई, ऊपर चली गई, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई हमारा बायस हो गया है इनवैलिडेट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बुलिश ना रह के, हम बियरिश ना रह के हम बुलिश में शिफ्ट हो जाएं, अपने बायस को बुलिश में शिफ्ट कर लें। तो इतना आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। अगर आप ये चाहोगे कि हर रोज मेरे को डेली बायस मेरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे, किसी का नहीं रहता है, ठीक है। मैंने कितनों की वीडियोस देख ली, हजारों वीडियोस देख ली यूट्यूब पे और हजारों मेंटोर की वीडियो देख ली, डेली बायस किसी का क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। कभी कभी डेली बायस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है, कभी कभी, ठीक है। वैसे डेज में आपको ए प्लस सेटअप मिलेंगे, बट वैसे डेज वीक में एक आध होंगे, एक या दो मैक्स, दो भी बहुत मतलब कम ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर टाइम एक आध डेली कैंडल ही होता है। तो आपको यूज करना होता है उसमें 3-4 चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसके ऊपर थोड़ा पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वीकली प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब कुछ वैसा नहीं कि क्लासिक क्लासिक प्रोफाइल और फिर वो कंसोलिडेशन प्रोफाइल, मिड वीक रिवर्सल प्रोफाइल, वो नहीं। प्रोफाइल का मतलब सिंपल एक वीक की कैंडल कैसे फॉर्म होनी चाहिए। अगर वीक मेरा बुलिश है, ठीक है, तो एक बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होएगी, पहले ओपन होएगी, विक बनाएगी नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ जाके अपनी क्लोजिंग देगी, तभी तो वो बुलिश होएगी। तो मेरे को सिंपल उसको थोड़ा एनालाइज करना है और एंटिसिपेट करना है कि अगर मंडे या ट्यूसडे ने लो फॉर्म कर दिया है, ठीक है, और एक स्विंग पॉइंट फॉर्म कर दिया है मंडे ट्यूसडे ने या वेडनेसडे ने, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो फिर थर्सडे को और फ्राइडे को बुलिश एक्सपेंशन कैंडल फॉर्म करेगी। बस इतना सिंपल आप ध्यान रखना कि वीकली प्रोफाइल का मतलब है कि वीकली कैंडल कैसे फॉर्म होएगी। डेली प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल, अब डेली प्रोफाइल में क्या है, डेली प्रोफाइल में सिंपल वही है कि अगर मेरा बायस मान लो बुलिश है, ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा, मेरा बायस अगर बुलिश है, मार्केट ओपन हो, नीचे आए, विक फॉर्म करे, फिर ऊपर जाए, अपनी बॉडी फॉर्म करे, ठीक है। अगर मेरा डेली प्रोफाइल सही नहीं है और मेरे बायस के साथ अलाइंड नहीं है, जैसे मेरा बायस तो है बुलिश, लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट ओपन हुई, सीधा ऊपर चली गई, विक फॉर्म किया ही नहीं उसने, ठीक है। तो अब विक नहीं फॉर्म किया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि या तो वो फिर वो ऊपर ऊपर चलती चली जाए, या फिर वो रिवर्स कर जाए और एक बियरिश कैंडल फॉर्म करे। तो इस केस में आपको आपके बायस को वैलिडेट करने का काम करती है डेली प्रोफाइल।
जो भी आपने बायस बनाया है डेली कैंडल पे उसको वैलिडेट करेगी डेली प्रोफाइल। ठीक है। अब अब जब मान लो अगर आपका डेली प्रोफाइल कुछ और बोल रहा है और बायस कुछ और बोल रहा है, तो यहाँ पे थर्ड चीज आती है 4 आवर प्रोफाइलिंग। 4 आवर प्रोफाइलिंग। 4 आवर प्रोफाइलिंग। आइडियल केस में आपकी डेली प्रोफाइल, 4 आवर प्रोफाइल और वीकली प्रोफाइल, आइडियल केस में तीनों सही होने चाहिए। ठीक है। बट कई बार हमारा डेली बायस सही नहीं होता है, तो हम 4 आवर प्रोफाइलिंग पे जाते हैं। तो इसमें फिर आपका डेली प्रोफाइल और 4 आवर प्रोफाइल ये दोनों अलाइंड होने चाहिए। ठीक है। डेली प्रोफाइल और 4 आवर प्रोफाइल ये अलाइंड होनी चाहिए। और साथ में इसमें फिर आ जाता है एसएमटी। एसएमटी 2 एसेट्स में भी हो सकता है, एसएमटी 3 एसेट्स में भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे करके हमें वो करना होता है। सो ये 4 चीजें आप अगर आप सीख लोगे परमेश्वर भाई, तो फिर आप डेली बायस आपके लिए फिर बहुत बड़ा कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह जाएगा। ठीक है। क्योंकि और एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, डेली बायस हर रोज आप नहीं निकाल पाओगे एक्यूरेट। ठीक है। कभी ना कभी डेली बायस आपसे गलती होगी। अगर आप डेली चाहोगे कि हर रोज मैं डेली बायस सही निकाल दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई कोई नहीं कर पाता ऐसा। ठीक है। विक बनाएगी तो वो विक पूरा डेली। हाँ, जैसे जैसे अगर देखो, अगर मेरा डेली बायस बुलिश था, जैसे ये देखो, जैसे ये वाला कैंडल देखो, इसने पूरे दिन विक ही बनाया है। ठीक है। लेकिन मेरा बायस था बुलिश। मेरा बायस था बुलिश। और कैंडल प्रोफाइलिंग में जब आप पढ़ोगे ना कैंडल प्रोफाइलिंग को, तो इसमें एक और चीज आपको समझ में आएगी कि कैंडल अगर ओपन होने के बाद बहुत ज्यादा बियरिश नीचे चली जाती है, ठीक है, तो फिर बहुत कम चांस होता है उसका कि वो एक बड़ी सी बुलिश कैंडल ऐसे फॉर्म कर दे। ठीक है। ये होने का चांस बहुत कम होता है, और इसीलिए मैंने अपना ऑब्जेक्टिव यहीं पे डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं यहाँ तक ही आएगा तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा या ब्रेक इवन पे कर दूंगा। जैसे अगर मैंने एंट्री समवेयर एट अराउंड दिस एरिया अगर ली थी, तो मैं यहाँ तक मैं अपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत बड़ा विक नीचे क्रिएट कर दिया है। ठीक है। इतना बड़ा विक अगर हमारा बायस बुलिश है, तो हम बुलिश एक्सपेंशन कैंडल पकड़ना चाहेंगे, ना कि इनडिसीजन कैंडल या फिर बहुत बड़ा विक का कैंडल। ऐसा कैंडल हमारा मोटो नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारे पास कई बार ऐसे सिनारियोज भी आते हैं कि मार्केट ट्रैप्ड रहता है बीच में एक रेंज में। ठीक है। जैसे आज का दिन था, मार्केट ट्रैप्ड था इस हाई और इस लो के बीच में। तो इसमें इस मार्केट के इस ट्रैप से निकलने के लिए मार्केट को लो या हाई दोनों में से किसी को तो मैनिपुलेट करना ही था, तभी तो इस ट्रैप से बाहर आता। ठीक है। तो वैसे केस में हमारे को कई बार बड़ा विक मिल जाता है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा टारगेट होता है, अगर हमने एंट्री की है, बायस हमारा बुलिश है और हमने एंट्री कर ली, तो हमारा टारगेट छोटा हो जाएगा। छोटा इन द सेंस कि आपको, क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए, कैंडल प्रोफाइलिंग का मतलब ये होना चाहिए कि एक कैंडल कैसे बन सकती है। ठीक है। तो अगर बड़ी वीक आ गई है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो कैंडल एक हैमर बना दे। हैमर या मॉर्निंग स्टार जो भी आप बोलते हो इसको, बहुत ज्यादा चांस है कि ये ऐसा कुछ बना दे। तो अगर आपने एंट्री यहां से ली है, अगर आपने इस कैंडल में, मान लो ये इसको मैं हटा दूं, मान लो अगर आपने कहीं यहाँ पर एंट्री ली है इस जगह पे, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आप निकल जाओगे इस एरिया पे।
क्योंकि अगर कैंडल आपका बायस बुलिश है, ठीक है, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इसके ही थोड़ा ऊपर नीचे करके क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ने अपना ज़्यादातर टाइम अपने लो को फॉर्म करने में दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल प्रोफाइलिंग जब आप करते हो कि एक कैंडल फॉर्म कैसे होगी, तो उसमें टाइमिंग का भी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना टाइम मार्केट ने विक बनाने में दिया है, या एवरेज कैंडल जो बन रही है डेली की, उससे कितनी बड़ी कैंडल विक बना चुकी है। ठीक है, तो वो जब आप मेजर करोगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ, तो इस एक कैंडल ने इतनी बड़ी मूव दे दी है कि जितनी आप देखोगे कि इस पूरे कैंडल का मूव था, ठीक है, उतनी बड़ी मूव इसने एक कैंडल ने दे दी। तो फिर ऐसे केस में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ से एक बुलिश कैंडल क्रिएट हो। ऐसे केस में बस मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस तक चली जाए एटलीस्ट, जो कि गई थी उस दिन। ठीक है, एग्जैक्टली अपने ओपनिंग प्राइस पे गई है और नेक्स्ट डे शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जब कैंडल प्रोफाइलिंग आप करोगे, तो ये चीज़ें आपको अपने आप पता लग जाएंगी। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। और एक चीज़ दिमाग से निकाल दो परमेश्वर, कि आपको डेली आप डेली बायस निकाल पाओगे ना, मुश्किल है ये बहुत, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप ये मान के चलो कि 50 से 70%, 80% तक बहुत अच्छे से कर पाओगे, तो 80% तक आप सही वो कर लोगे, सही अंदाजा लगा लोगे डेली प्रोफाइल का। बट वैसे आप नहीं लगा निकाल पाओगे डेली प्रोफाइल, डेली आप रोज आप डेली बायस नहीं निकाल पाओगे। जैसे हम आज का दिन अगर हम देखें, तो अगर हम आज के दिन की बात करें, तो देखो आज का अगर मैं बोलूं कि मैं डेली बायस जानता हूं कि बुलिश होगा, तो भाई कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अगर हम तीनों एसेट्स को देखें, ईएस को और एनक्यू को और वाईएम को, तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि आ, आज का दिन बुलिश होने वाला है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको, ईएस को, तो वेडनेसडे को इसने अपने हाई को तो नहीं लिया है, लेकिन ये बेरिश क्लोजिंग दी है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो इसने, अगर मुझे बुलिश फॉर्म होना होता कैंडल, अगर अगर आज का कैंडल जो कि थर्सडे का कैंडल है, अगर इसको बुलिश जाना होता, तो ये इन हाइज को पहले नहीं लेती। ठीक है, ये ओपन होती यहाँ से, लो फॉर्म करती और फिर ऊपर जाती। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म होता। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कैंडल प्रोफाइलिंग के थ्रू ये समझ पा रहा हूँ कि भले मेरा बायस तो बुलिश है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ओपन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हाईज, ये इक्वल हाईज यहाँ पे पेंडिंग तो है, लेकिन मैं जब कैंडल प्रोफाइलिंग देख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, दाल में कुछ काला लग रहा है। क्योंकि ये जो है, इसने अपने प्रीवियस वीक, मतलब जो प्रेजेंट वीक है, उसके हाई को हिट किया है और नीचे की तरफ क्लोजिंग देने लग गई है। ठीक है, तो ये प्रोफाइलिंग मुझे सही लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मार्केट ओपन हो, लो फॉर्म करे और फिर हाई फॉर्म करे। लेकिन यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ओपन हुई है, हाई फॉर्म किया, फिर शायद लो फॉर्म किया और फिर शायद यहाँ पे कहीं आई है। तो अब हम 4 आवर, पहले 1 आवर पे जाते हैं, ताकि देख पाए कि कहीं मार्केट किसी रेंज में तो नहीं है, और फिर हम 4 आवर पे जाएं, ताकि हम प्रोफाइलिंग कर सकें 4 आवर की। और अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, जब मैं इसमें जा रहा हूँ 1 आवर पे, तो मुझे क्लियर कट एक चीज़ समझ आ रही है कि मार्केट ने एक रेंज के हाई को हिट किया है। अगर आप देखोगे तो ये रेंज हाई है, इसको हिट किया और ये कंटिन्यू कर रही है नीचे की तरफ। ठीक है, और सेम यहाँ पे हमें एक एसएमटी मिल रहा है दूसरे कैंडल्स में, दूसरे एसेट्स में, बट इस एसेट्स को हम ट्रेड करते नहीं है ऑल दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी दिया है मार्केट ने,
ठीक है, और नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है अपने हाई को लेने के बाद। ये एक रेलेवेंट हाई है, ठीक है, रेलेवेंट हाई है, उसको हिट किया है और ये नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, तो बायस तो बेशक हमारा बुलिश था, ठीक है, क्योंकि इक्वल हाइज पेंडिंग थे। आप ये देखो, इक्वल हाइज पेंडिंग है, लेकिन क्या मैं आज यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये बुलिश चला जाए और इस इन इक्वल हाइज को ले ले? नहीं। क्यों? क्योंकि डेली प्रोफाइल मेरे को ये अलाउ नहीं कर रहा है। मार्केट ओपन हुई, लो हाई फॉर्म किया, जबकि अगर आपको बुलिश कैंडल फॉर्म करना है तो पहले उसको लो फॉर्म करना होता, फिर वो हाई फॉर्म होती। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया है मार्केट ने पहले अपने हाई को फॉर्म कर दिया है। ठीक है, पहले हाई फॉर्म किया, फिर लो फॉर्म कर रही है। तो उस तरीके से तो मेरा बायस यहाँ पे एक तरीके से बियरिश हो चुका है। मतलब मैं बियरिश की तरफ ज़्यादा उसमें हूँ। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो और तो हम ये पाएंगे कि अब 4 आवर प्रोफाइलिंग भी थोड़ी देख लेते हैं हम। 4 आवर में भी मुझे ओके ओके 4 आवर थोड़ा अलग अलग चीज़ें बता रहा है। ठीक है, 4 आवर में हमें ये दिख रहा है कि 4 आवर ने एक बुलिश क्लोजिंग दी है इसके अबव। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक हम इसको बोलेंगे, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिल रहा है हमें। ठीक है, तो 4 आवर में हमें थोड़ा डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे, बट स्टिल हम तो अब यहाँ पे हमारे साथ देखो, डेली बायस हमारा बुलिश है, 4 आवर प्रोफाइलिंग भी बुलिश बोल रही है, लेकिन जो हमारा डेली प्रोफाइलिंग है वो हमें बियरिश का सिग्नल दे रही है। तो हम आराम से वेट करेंगे 9:30 के ओपन होने का, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा और देखना हो कुछ एसेट्स में क्या चल रहा है, दूसरे एसेट्स में क्या हो रहा है, तो अगर आप देखोगे कि दूसरे एसेट्स भी मैनिपुलेट तो किया है अपने हाई को, लेकिन वैसा कुछ मतलब बियरिश ही, इन एसेट्स वाइज तो मेरे को बियरिश ही दिख रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, आज बियरिश ही दिख रहा है। यहाँ पे भी इसने एसेट्स को मैनिपुलेट किया है, कंटिन्यू नहीं कर पा रही है नीचे की तरफ, या फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि ये रेंज बाउंड भी हो जाए। ठीक है, तो हम आराम से 9:30 का वेट करें, क्योंकि 9:30 पे में एक बड़ा मूव आने का वो होता है एक्सपेक्टेशन। ये 8:30 पे न्यूज रही होगी। 13 फैब को एक पीपीआई एमओएम ये न्यूज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने इस लो को मैनिपुलेट किया, ठीक, और फिर अब इस हाई के पास जा रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मार्केट इसको मैनिपुलेट करती है या कंटिन्यू करती है। और वैसे हमें रेंज बाउंड टाइप का ही मार्केट कंडीशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस हाई के पास क्या करता है मार्केट। मार्केट इसको मैनि अब सारा खेल इसके ऊपर है, क्योंकि डेली बायस 4 आवर प्रोफाइलिंग में हमें कुछ बहुत क्लियरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन अब हम वेट करेंगे कि भाई आज के लिए मार्केट करती क्या है। और हाँ, बट एक चीज़ जो जो मुझे लग रही है कि एक बार मार्केट इसको मैनिपुलेट कर देगी तो फिर ये ऐसा नहीं करते, फिर ये सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल हो जाएगा। मार्केट ओपन हुई, नीचे जाके सबको लिया, फिर ऊपर जाके सबको लिया, फिर नीचे आ जाए, तो ये एक तरीके से सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल क्रिएट कर देगी, और ऐसे प्रोफाइल में हम यूजुअली ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। तो हम वेट करेंगे 9:30 के ओपन होने का। ये 9:30 ओपन हो गई है। ठीक है, 9:30 ओपन हो गई और ये कंटिन्यू करने के उसमें है। नहीं 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 नहीं, कंटिन्यू करने के उसमें नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न है। अगर आप देखोगे, अगर आप इस प्राइस एक्शन को देखोगे वाईएम में, ये क्लियर कट कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रही है। अगर आप यहाँ देखोगे ईएस में, ईएस भी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि
ये यहाँ जाके नीचे की तरफ गिर जाए, तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। ये 9:30 नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि मार्केट क्या करना चाह रही है अभी। अबे कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ, और इसने अपने हाई को हिट कर दिया है। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था पहला वाला, डिफिकल्ट था आज को प्रिडिक्ट करना, थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है, कंपैरेटिवली। और यहाँ से हम देखेंगे कि क्या फॉर्म होता है आगे। कंटिन्यू कंटिन्यू। ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं, तो इसके बाद मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। ऑल दो हमारा बायस तो बुलिश था, और ये गई भी है बुलिश, लेकिन मेरे को कहीं पे भी प्राइस एक्शन इसमें क्लियर कट समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी प्रीवियस हाई को हिट कर दिया था। तो जब भी ऐसा हो जाता है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मार्केट अगर पहले ही हिट कर देती है, तो फिर तो फिर डिफिकल्ट होता है आपको यहाँ से ट्रेड लेना, ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है। तो फिर हमें वेट करना होता है कि मार्केट अपने इस लो को ले, मैनिपुलेट करे और फिर कंटिन्यू करे। तो मार्केट ने वो भी नहीं किया, तो फिर इसलिए आज लिए मेरे को मतलब कोई भी ट्रेड लेना बाइंग साइड या सेल साइड थोड़ा रिस्की था। तो नेक्स्ट डे पे हम मूव करते हैं। सो आज फ्राइडे है, और हमें यूजुअली हम फ्राइडे को TGIF चाहते हैं, क्योंकि मार्केट को अपना विक भी फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट अपना विक फॉर्म करे। अगर एक वीकली कैंडल क्लोज हो रही है फ्राइडे को, तो अपना विक फॉर्म करेगी, तो वो हमें TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, फॉर्म करती है। चलो ठीक है भाई परमेश्वर, पर रात में ही टाइम मिल पाता है, क्योंकि 5, 5:30 से 8:30, 9:30 तक तो आप लाइव लाइव में होता हूँ मैं। ठीक है, लाइव ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो फिर उसके बाद 9:30 के बाद फिर टाइम बहुत मुश्किल हो पाता है कि मतलब दिन में मिले टाइम। रात का ही टाइम मेरे पास है बस एक परमेश्वर। चलो फिर भी ट्राई करेंगे कल से थोड़ा पहले आने का। गुड नाइट। चल रही है।
हाँ श्रीमंत। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने अपना हाई फॉर्म किया, नीचे की तरफ गई और अब ये रिट्रेस कर रही है। ठीक है, रिट्रेस कर रही है तो हम वेट करेंगे। और यहाँ पे मुझे एक अपोजिंग कैंडल कह लो या ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो आप इसको, यहाँ पे है मार्केट। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे को एक स्विंग फॉर्म होता हुआ मिल जाए। ठीक है, ताकि हम ट्रेड फॉर्म कर सके। मार्केट ने कंटिन्यू किया है, स्टिल हम वेट करेंगे नेक्स्ट 30 मिनट के कैंडल के ओपन होने का, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो ये एक तरीके का सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल लगा। पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से ये सीक एंड डिस्ट्रॉय फॉर्म कर रहा है, बट हम वेट करेंगे नेक्स्ट 30 मिनट के कैंडल के फॉर्म होने का। अगेन अगर आप इस तरीके के कैंडल पे एंट्री लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको लॉसेस मिलेंगे। सो इट्स बेटर कि ऐसे प्राइस एक्शन को आप अवॉइड करो, क्योंकि इसमें मार्केट रिस्पेक्ट कर नहीं रही है किसी भी लेवल को। इट्स लाइक सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल, एंड टुडे वाज आल्सो फ्राइडे, सो इट वाज डिफिकल्ट टू टेक एनी ट्रेड। देखो सीधा नीचे आई और कंटिन्यू करी ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर आप सच बताऊं तो पीएसपी के ऊपर ज्यादा मैंने वैसे प्रैक्टिस तो किया है, बट पीएसपी बेस्ट वर्क तभी करती है जब आपका डेली बायस वगैरह अलाइंड हो। अगर डेली बायस अलाइंड नहीं है और डायरेक्टली अगर आप पीएसपी लेने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो लॉसेस दे देगी आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो मतलब वाईएम को मैं फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, और डेली बायस की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल अपने एक इक्वल हाइज पे है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं पीएसपी सोच के अगर मैं सेल की तरफ जाऊंगा तो मतलब यहाँ पे रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लो हाई फॉर्म कर चुका है, लो फॉर्म कर चुका है, और यहाँ पर ट्रेड लेना मतलब बाइंग में या सेलिंग में दोनों साइड में रिस्की है थोड़ा। सो मैं अवॉइड ही करूंगा आज का दिन। और इसका रीजन है अवॉइड करने का, क्योंकि अगर आप पास्ट पास्ट के डेज को देखोगे, ठीक है, तो मार्केट एक्सपैंड की है, मार्केट ने, आप देखोगे कि ये भी एक एक्सपेंशन कैंडल ही है। ठीक है, ये भी एक एक्सपेंशन कैंडल है, ये भी एक एक्सपेंशन कैंडल है, टू एक्सपेंशन कैंडल। ठीक है, ये भी एक्सपेंड करी है मार्केट ने, अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट जितना बड़ा ये कैंडल है उतनी ही बड़ी ये भी कैंडल नीचे आई और ऊपर गई, फिर सेकेंड कैंडल भी एक्सपेंड की, और दो कैंडल्स ने रीच कर दिया है अपने ऑब्जेक्टिव को। तो अगर आपने फ्रैक्टल मॉडल का कोर्स देखा होगा तो उसमें एक जगह पे उसने बोला है कि जब भी थ्री कैंडल्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव एक्सपेंशन कैंडल या टू कॉन्जिक्यूटिव एक्सपेंशन कैंडल कभी भी अगर अपने ऑब्जेक्टिव को रीच कर देती है तो हमें न्यू फेज ऑफ प्राइस देखने को मिलता है। तो मुझे अभी यहाँ पे नहीं पता है कि मार्केट रिट्रेस करेगी या कंटिन्यू करेगी या कंसोलिडेट करेगी, तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करूंगा आज एंट्री एंट्री लेने से। ठीक है, ये देखो अगर मैं पीएसपी सोच के इसको सेलिंग की तरफ जाता,
ठीक है, तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर मैं यहाँ पे सेलिंग की तरफ जाता पीएसपी का सोच के। आप यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लेते तो आप लॉस ही करते, क्योंकि ये एक इक्वल हाइज है और मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप 15 मिनट वगैरह को देखोगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते, इसमें आप प्रॉफिट्स नहीं निकल पाते, यहाँ पे आपको लॉस ही होता। ठीक है, क्योंकि मार्केट कंप्लीट कंसोलिडेट कर गई यहाँ पे। ये भी थोड़ा करेक्टिव प्राइस एक्शन था, उसके बाद मार्केट 9:30 से लेके और 12:30 तक कंसोलिडेट किया है मार्केट ने। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना मुझे सही नहीं लग रहा था। स्टे पे हम मूव करते हैं। फ्राइडे, नेक्स्ट डे तो मंडे होगा ना। मंडे, फिर शो क्यों नहीं कर रहा है? 7 8 मंडे, आई डोंट नो व्हाई मंडे इज नॉट शोइंग हियर। What happened to Monday? I don't know. Okay, what is happening? Okay, so it skipped Monday. I don't know why. It opened from Tuesday 18th Feb. Okay, that's all right. Let's start our trading. In futures trading, you have to be very cautious because it's very easy that you get a lot of losses. And I have been at that place कि जहाँ पे फ्यूचर के मोमेंटम को देख के कि एक बुलिश कैंडल आ गई बहुत बड़ी, फिर एक बियरिश कैंडल आ गई बहुत बड़ी, तो मैंने दोनों डायरेक्शन में लॉस लिए हैं, भर भर के लॉस लिए हैं। तो अब जब तक मेरे को डेली या 4 आवर बायस क्लियर नहीं होता है, तब तक मैं फ्यूचर्स में ऐसे ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत इजीली आपको फ्यूचर्स मैनिपुलेट कर देगी और आपको लॉस दे देगी अनटिल अनलेस आपका डेली बायस क्लियर ना हो। तो ये रहा हमारे पास, पता नहीं ये आ, ये ट्यूसडे से क्यों ओपन हो रहा है, बट खैर चलो कोई नहीं। तो हमारे पास एक क्लीन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, इक्वल हाइज। ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे हमारे पास। मार्केट यहाँ तक रीच करना चाहेगी। ठीक है, और चूंकि हमारे पास एक यहाँ पे न्यू वीक ओपनिंग गैप भी है, तो मुझे नहीं पता मंडे कहाँ ओपन हुई है, क्योंकि मंडे शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर हम डेली देख रहे हैं तो मेरे को फ्राइडे दिख रहा है, उसके बाद सीधा ट्यूसडे दिख रहा है, तो मंडे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे शायद ये मंडे रहा होगा यहाँ पे कहीं, बट पता नहीं क्यों ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। 4 आवर पे हम आ जाते हैं। सॉरी, पहले हम 1 आवर को देखेंगे ताकि हम डेली प्रोफाइल का आइडिया ले सकें, उसके बाद हम फिर 4 आवर पे शिफ्ट करेंगे। You can look for DXY, Euro USD, and GBP USD, and you can also look Euro, gold, and then silver. That triad, you can also use that triad. Just today, I also take a trade on GBP USD, but I closed it in break even, and then it moved into take profit. So I discussed that trade earlier. So this was the trade. You can use the triad.
Yes, gold, gold, XAU, EUR, and silver. You can use gold and silver also, but sometimes you will see that gold and XAU, EUR is bullish, and whenever, see, silver and gold are metals. Okay, so if silver will be bullish, then there is a high chance gold will catch up that momentum in some time, in some, but because it's not the currency that is, it means if let's suppose gold is bullish and silver is bearish, so okay, so you can use this triad, gold triad, where you can XAU EUR, gold XAU UST, and silver. You can use this triad. So here what I can see that market just opened and continued its move to the upside. It did not form any low, so that's, and this was the Monday. So Monday also I am not sure that that it has formed the week. So there is some missing piece of price, but that's all right. So for today, I can see that we took this. Let me just we we took this high, and after taking this high, it's basically a liquidity run. It's a sweep. Okay, and let me just. So this is the same high. I think, yeah, this is the same high. So market is trying to continue its move to the upside. So there is a high chance that this pair will also catch up. NQ will also catch up, and you can also see that NQ taking support from this order block. So this is basically a consolidation. So what I would like to see during 9:30, that market manipulate these lows and then give us a swing point so that we can trade a continuation. Okay. Market just continued up before manipulating. So let's move to 30-minute time frame, and this is not good. Like market, if let's suppose market hit this area before manipulating the low, okay, so that will not be a good idea to take a big trade. Okay, so now then we will be looking for any selling opportunity. Why? Because we do have a lot of failure swings here. Okay, and at the same time we did not manipulate these lows also. So it's not good. Just wait and see. Perfect. So market just opened, took this high, and then continuing its move to the downside. And here we can see that we are having some sort of SMT. Okay.
So let's wait to see what the next candle does. Just continued its move to the downside. So I'll be waiting for a 30-minute candle to open. Sorry, 10 a.m. candle to open, and then I will decide what to do. So now, so this is a 30-minute candle. Market opened, came down sharply. Okay. Let me just go to the daily chart again. For me, I don't think that market will continue its move to the upside after giving this sort of large wick. Wait, let's suppose, and after market took this low, wait, a little risky trade, I would say, a risky day, I would say. Okay, but after analyzing all those things, I think that the market will continue its move to the downside, because it took the high first and now continuing its move to the down. Okay, and we do have some failure swings here. Okay, so there is a high chance that it will continue its move to the downside. Okay. So in that case, I need, let's suppose if I want to take a trade to the downside, or let's suppose I want to take a trade to the buy side, because my daily bias is not very clear. So let's suppose I get a candle 2, like candle 3, I would say, or candle 2 at around this area. Okay, so then that will be a bullish swing to take the trade. Now let's see what the next candle does. Okay, here we are seeing some sort of uh, liquidity sweep or manipulation at these lows. Okay, so we can expect some sort of continuation of move, because we do have some pending. Market took these lows and now it's showing some retracement. Okay, so let me just go to 3-minute time frame and let me just see what it's doing. If we break this high just like this, that will be a good trade. If let's suppose it just making some sort of range, then that will not be a trade which I would like to take. No. Trying to continue its move to the downside. Again, I don't want to indulge here. Now this is what time it is. We have just closed 1 hour candle and it's C2.
I would say. If you look closely, then this is C3 candle. Okay, candle 1, candle 2, candle 3, and now we will expect candle 4 to continue. It's moved to the upside, and here also this is candle 3. Okay, so I would like to take a buying trade. Let me just wait. So I would like to take that buying trade at around this area. We have this fair value gap and this opposing candle. Okay, which is just near to the opening of this 11 a.m. candle. So let's just place that trade. ISL will be at around this area, because let's suppose market comes down all the way down and will violate this fair value gap, then there is a very low chance that it will continue its move to the upside. So there is no need to give extra room for this trade. Take profit would be 1:2. It's a buy trade. 640. Okay, let's place our buy limit. Okay, hit our entry, and now let's see if it continued. Okay, now the market has broke this area. So once it breaks this area, I would like to just place our SL at around break even, because now it has become a protected swing. Okay, because market has did change in state of delivery. So now let's suppose if market comes all the way back here, so there is a very low chance, then that means that the market wants to be inside this range. Okay, okay, that's fine. See, I knew that if the market does not continue from there, then there is a high chance that it will create some sort of range. When I did not wait for CSID, for this trade, here I have already we have already got our CSID at around this. Let's see. This is our main candle, and then you can mark our CSID at around this area. Okay, and again, yes, I told you yesterday that if we are having a CSID near to our next candle opening, let's suppose we did our CSID just before 2-3 candles before opening of this 11 a.m. candle. Okay, if you look at this, so we did our CSID just before closing, before this candle closing. Okay, so there is no need to wait for again, because if let's suppose I wait
for a CSID. I have already an invalidation area, and let's suppose I wait for CSID, then my entry would be somewhere at around this area. Okay, this would be my entry here, because it came down, hit this key level, and then form a CSID. Okay, so then it would be a late entry. Okay, but I place my entry at around this key level. Okay, and this is an invalidation area. Let's suppose market comes down like this. So anyway, it will invalidate my entire logic. So there is no need, there is no reason to stay in this trade if suppose market comes down all the way back here. Okay, so there is no need to wait for CSID here. It was just like yesterday I gave you that example, that when we get invalidation area just before opening of the new candle, then we can ignore the inter-candle chain instead of intra-candle. So let's move to next day. And in that way, I saved my 1%, like one loss. Because if let's suppose I would have taken entry at that late, then I would not get chance to break even my trade. And here I can see that market is forming some sort of consolidation. Okay, it's in season candle, and all three assets are in some sort of range. So it is a little difficult for us to take trade today. But here what I can see, that we are having a key area. Okay, market hit that key area, and at the same time NQ is continuing its move to the upside. Okay, so we have an SMT. Okay, and with this SMT, we do have market has not taken the previous day high. Okay, so this is our first objective, previous day high. And here also the market has not taken the previous day high. So this is also our objective for the market to reach and take this previous day high. Okay, and here we have hit our internal range of liquidity, IRL, to ERL, external range of liquidity. Okay, we do have equal lows, relative equal lows. Okay, so with the daily profiling, we can assume that a market should continue its move to the upside. And here also in ES, we can see that it did change state of delivery, but it also traveled back till 50% of this entire range. Okay, so here what we can see, so let's just go to the 1 hour time frame and see what the other markets are doing. So let's wait for 9:30 to open, and then our bias is still bullish. Okay, market has taken this low, and we do have pending highs here. Okay, and this was just some sort of retracement, I would say. It's not a continuation to the down. It's looking like a retracement candle.
Okay, just wait for 9:30 to open. Sorry, my audio was mute. Okay, so we are completely inside this range. Okay, if you look closely, so we are in between these range. Okay, so taking any trade will be a risky trade in between these ranges. Okay, so if you look at this range, we are also near equilibrium of this range. Okay, so I will wait for any asset, any of these three assets to manipulate the low of the range or high of the range so that we can anticipate what's the next move. तो अगर लो के पास आती है तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट फेज ऑफ प्राइस डिलीवरी का। अगर वहां से हमें एक स्विंग फॉर्मेशन होता है तब हम बाई करेंगे। बट अगर हम यहाँ पे लिक्विडिटी रन करता हुआ दिखता है हमें, तो हम वेट करेंगे। तब हम फिर एक कॉन्टिन्यूशन ट्रेड फॉर्म करेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। बट अगर हमें यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट फॉर्म होता तो हम एक रिवर्सल ट्रेड फॉर्म करेंगे। बट अभी हम वेट करेंगे, अभी कुछ भी है नहीं हमारे पास, ठीक है। बट अगर मैं वैसे बोलूँ तो मेरे को यहाँ पे एक ऑर्डर लास्ट डाउन कैंडल है, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा हम वेट करेंगे। अगर वाईएम ने इसके लो को ले लिया तो फिर ये एक एसएमटी होगा और सारे एसेट्स कंटिन्यू कर जाएंगे ऊपर की तरफ। सो लेट्स सी क्या करता है नेक्स्ट कैंडल। ओके, हम वेट करेंगे। अभी भी कोई स्विंग फॉर्मेशन नहीं हुआ है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमें पीएसपी देखने को मिल रहा है, बट स्टिल पीएसपी अगर हमारा किसी पर्टिकुलर स्विंग पॉइंट से होता है या फिर किसी एसएनटी के बाद पीएसपी होता है तभी उसका फायदा है। अगर हम डायरेक्टली पीएसपी को यूज कर रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा है नहीं। जैसे अगर मैं दिखाऊं पीएसपी के नोट्स, जस्ट जो मैंने पीएसपी बनाया था, तो पीएसपी अगर आप किसी स्विंग पॉइंट से ले रहे हो, अगर आप पीएसपी को यूज कर रहे हो रिवर्सल के लिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक एसएमटी के बाद पीएसपी बन रहा है। अलोन पीएसपी का कोई यूज नहीं है। अलोन पीएसपी अगर आप यूज कर रहे हो तो किसी फायदे का नहीं है।
अगर आप पीएसपी को एसएमटी, पीएसपी कंफर्म एसएम सीक्वेंशियल एसएमटी और एसएमटीज, ठीक है, तो it is a confirmation tool. You cannot alone use PSP. It's a confirmation tool. Okay. So ये हमारे पास देखो, ये यहाँ पे एक PSP बन तो रहा है, लेकिन क्या ये किसी किसी SMT के थ्रू बन रहा है, या फिर आफ्टर SMT बन रहा है, या फिर किसी की लेवल को मैनिपुलेट करने के बाद बन रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इट इज जस्ट अ नॉर्मल PSP. सो हम, इट इज जस्ट अ नॉर्मल कैंडल. सो हम वेट करेंगे मार्केट के मैनिपुलेट होने का. अगेन अभी भी कुछ भी नहीं है. 10:30 हो चुका है, ठीक है, मार्केट काउंटर कर रही है, बट एक रेंज बाउंड मार्केट कंडीशन में है. इसमें कोई भी ट्रेड मेरे हिसाब से सेट नहीं हो रहा है. 8:30, दिस वाज अ 9:30. ओके. Now, so this is the reason why I was not looking for any sell setup at around this area. This was the only reason why I was not looking for any sell setup. Now, after this candle, okay, after this expansion candle, we can look, but still, like, it has not manipulated any significant swing point or any key level. So I don't think we should take any trade right now. We are still in this range. Market has not taken off the range. Okay, it was just some sort of reaction because of 9:30. So I don't want to involve here because market has not taken significant any significant key area. So I just want to wait. So for today's, there were no, I don't want to indulge this sort of price action. Okay. Because market did not hit any relevant key area. And this is the reason why I did not wanted to be in the market. You can see 9:30 opened, continued slightly, and then just reversed. So it was again some sort of seek and destroy profile. Market open, bounced the high, came down, okay, and then again went up, took this high, and again coming down. So it was some sort of seek and destroy profile. And why it's doing like this candle was also because market has now reached at the top. We could look for a trade here in YM. This is a PM session trade because market manipulated the low, and you can see after manipulation you can we got this move to the upside. Okay, so we could look for a trade in YM, but it was a PM session trade, and I usually don't trade. Not usually, I never trade PM session. So let's move to next day. And next day I can see that market manipulated previous day high, which I had already marked. Market has manipulated previous day high, and again, see, sometimes you have to understand that you don't get trades daily. Okay, sometimes you will get trades like one trade in a week, because you can see the market is completely inside this range. Okay, so whenever you face these sort of conditions, then you should just save your capital. Don't try to take trades. Okay, we are already reaching at the top. So taking any trade will be a risky one. So here what we can see that market is consolidating. Okay. ES has reached
at the high of this high of all-time high. Sorry, ES has reached all-time high. Okay, but NQ has not reached yet, and ES is very late. I would say this is the weakest pair. Okay, so as per our asset synchronization and desynchronization phenomena, so right now assets are desynchronized. Okay, so once the second strongest asset reach or manipulate the key level, then all three assets will synchronize after confirming through strength switch. Okay, so what I want to say that ES has reached this high. What I want to see that NQ also reach this high, and then all three assets will continue its move to the downside, because I'm not expecting that YM should reach all the way up here. But if let's suppose NQ reaches here and start giving us some consolidation, then it means market wants YM to reach at this area, and then our new phase of price will unfold. Okay, so let's wait now. So based on that logic, I want for the market to continue its move to the upside. Okay, so for continuing move to the upside, we need for the market to manipulate the low, previous day low, at least previous day low, or any consolidation area. But here what we can see that we have manipulated the low, manipulated the previous day low through NT. Okay, but we know from, like, here we can see that market has manipulated this through SMT. Previous day low has been manipulated through SMT, and here also we are having some sort of a strength switch. See, market has taken this low, but it's continuing its move to the upside. Okay, so market has opened, formed the low of the day, trend switch, trying to continue its move to the upside. Okay, so we will wait for 9:30 to open. So at 9:30, what I want to see, I would like to see market has already taken this low, so there is no need that the market should again continue its move to the downside. So we do have a low at around this area, but let's see. So basically what I want to see that either market can continue its move to the upside, or it will just came down, retrace, manipulate these lows, okay, and then continue its move to the upside. But anyway, I just want the market to continue its move to the upside. Okay, so let's move to 15-minute time frame, because many times if you will stay in 30-minute or 1 hour, you will miss moves. Okay, so this is the thing which I wanted to see. Okay, market manipulated these lows, and now I want a C2 formation. Okay, oh, it just continued its move to the downside. It did not give us any opportunity to be in the trade. So let's just look. So again, it was Tuesday, Wednesday, Friday, Monday.
Okay, Tuesday, Wednesday, Thursday. We do have some sort of key level at around this area. Okay, so let's just it for 15-minute time frame. We can again, because market has taken a lot of swing lows. Okay, so let's just wait and see. Market has taken this relevant swing. Okay. So let's just wait and see what it does. Okay, so we have formed C2 at around key area. Market did not manipulate anything high. This is not a manipulation, I would say. We do have a lot of failure swings, I would say. These are just failure swings. Okay. So here I would like to take a buying trade. And now you can also see this is a PSP. If you look, so this is the PSP which formed at around key level. If you look at the 4-hour time frame, okay, so this is a 10 a.m. candle, 10:15. Okay, we do have a key level. We have key level. Market 9:30 opened and then just continued its move to the downside. Okay, took all these lows, took all these relevant swing lows. Okay, and now we can get some sort of continuation to the upside. Here also you can see on daily time frame, market had just this was a fuel liquidity, I would say. It was just a liquidity which market took and just showing some sort of continuation to the upside. Okay, so I will switch to 3-minute time frame and then try to wait for this is 10:30. This is 10 a.m. candle, and we don't have any swing right now. Any here. So I will wait to see what does the market does, because see it's consolidating. So usually when you see this sort of consolidation, there is a high chance that market will manipulate and then give us a change state of delivery, then we will take a trade. Yeah. So just wait. This is 10:30. Okay. Now we can see that we have formed a C3. Okay. Hitting a key level, forming C3. Okay. So now we will take a trade in C4. And here I would say that here we will wait for intra candle change in state of delivery, because our invalidation area is near to the opening area. Let's suppose this candle is not present, or let's suppose this is not present here. Then what I would like to take, I would like to take the trade, place a limit order at around this area. Okay, and then I will wait to take this trade. But as we are having a consolidation area or invalidation area near to this, so there is a very high chance that market comes down and manipulate this low and then continue its move to the upside. Or we can do like this. We can also do this. Okay, so here I will wait for intra candle change in state of delivery. Okay, it just tagged this low, and we also have some sort of key level.
If you go to the 2 minute time frame, then you can see we do have a change in state of delivery, and we were manipulating, forming some sort of consolidation. And then if let's suppose I get CSID, I would like to take the trade. See, this is the thing which I did not wanted to see. Okay, I just did not wanted to see that. If I would have placed a limit order at around this area, it would be a loss. So for me, I don't want to take any trade after 11. No, because we just chopped around. Nothing. See, this is the reason why we like everybody should do back testing. When you do. Yeah, sure, Saman. So, Srimante. See you tomorrow. Bye. Good night. So here we can see that market hit this key level and showing some sort of reaction, and then we can continue from here. At the same time, you can see that IM is reaching towards these lows. That's all right. Here we are having some sort of change in state of delivery in 4-hour time. So this is Friday. Yeah, the market ranged for some time and then continued its move to the upside. It gave C1, C2, C3, C4 entry. C4 entry. This was a C4 candle entry, but again it was late in the day, so I did not want to gain the trade. Now today market has formed the low, took this low, and now trying to continue its move to the upside. Let's just move. We do have some sort of key level.
it was a difficult day for me because I wanted for the market to continue its move to the upside, but it just opened, went up, took this high, and then just retraced all the way back up to the down. We do have new day opening gap here. Let's see. Market has taken previous day high. Okay, and now trying to continue its move to the downside. So here I would like to wait for a market to reach from these areas. So for me, market is completely inside some sort of range. Okay, so market took the high of the range, but not this is not the high. So for me, this is the high of the range. Okay. So it took the high of the range. It did not give us any opportunity to win the trade because market just expanded its next candle. Okay, and this was 9:30 candle. It just opened and continued its move to the downside. If let's suppose I would have taken an entry, I could look for an entry at around this area, but again, it would be a risky entry. Just taking entry before 9:30 would be a risky one. So I did not want it to be in the trade. And now market has reached to the low of the day, low of the range, and now we can see that after reaching the low of the range, market has just retraced all the way back up. So this is a clear sign of rejection. Okay, so and this is the candle 2, and then I would like to take entry in candle 3. And here we can see that market has did CSID. Okay, market has done. Let's just wait for one more candle. Okay, perfect. Now we are having some CSCI. So we are having an invalidation area. So I would like to take a trade from here. SL will be below this low because I don't want the market to continue all the way back down.
take the low and then continue its move to the upside. It will be like I don't want for the market to continue all the way back down. So now I can see that market is forming some sort of range, and so usually we don't like this sort of price action. Okay, but because it's already 11:30, so that's why market is some sort of showing some sort of choppiness, and that's all right. It just hit our stop loss, you know, because it was a nice trade though. After three three expansion candle, we just wanted to. We were just waiting for a new phase of price delivery. Just continued its move to the downside, and that's all right. We have two expansion day, and market has reached at an area of equal lows. So let's wait for our candle to close. After looking at daily candle profiling, we can see that we have a change in state of delivery. Here we did not get any change in state of delivery. We are just, but still we are seeing some sort of bullish move, which almost crossed these highs. Okay. So let's wait for 30 minutes.
we can see that we are having a lots of relevant equal highs. Okay. Market has not taken these highs, so I will wait for a market to take these highs. And it did, and here it did take high, but it did not give us opportunity to be in the market. And 8:30, 9:30. So this was 9:30. Market continue its move to the downside, and here we can. And then let's move to the daily time frame. Daily is also continuing its move to the down. See if we can get a chance to be in the market. Here what we can see that market has already taken this low, and here I will wait for a 15-minute candle to create. 10 a.m. showing continuation of the move. Okay, let's just finish our backtesting today. I think I have taken one or two trades. So 2 trades I have taken. So I total I took around in February I took 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades total. Okay, in January. So in 7 trades, we are having 1 winner, 2 winners, and then 1, 2, 3, 4 losers. And overall, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6 losers and 1, 2, 3, 4, 5 winners. So it's almost like 40-45% win rate, and that's good. So for the beginning, it's good. And also, I can see that I do miss some trades, but that's all right. You know, we cannot capture every move. So this is my equity curve, which is quite good. Slowly and steady. We have total 12 trades, 6 winners, 6 losers. 7 trades in January, February, and 5 trades in January. And right now we are having a 42% win rate. So that's good. Perfect.
let's see. 12 trade, total 50% win rate in 12 trades. So it's a good, I would say it's a good stats. I will complete this entire December, and let's see how is our month, this 2024 ends.